Have a glass of water if you want to have. No, no, I have. Good. Awesome. So yes, Chitranshu, what will you say about today's performance? Had you been in my place as an interviewer, would you have selected yourself? No, I would have not selected. It was There is simple. the question, right? There is your answer as well. I would also not have selected you according to today's performance. Why I'll tell you. So it's nothing to feel bad or nothing to be worried about as well. It is not your problem. It is everyone is facing going through this phase only. That they have worked, they are telling that they have worked on Tableau, but when it comes to expressing, when it comes to sharing the knowledge in regards to experience, everyone is failing. Most of the candidates are failing. So honestly say that have you worked on Tableau or you have just started working on it? Tableau from 2021, I have started to working in the 2021. Tableau. There's a lot of experience then. 2 years experience is fine. So 1.5 years of experience at least. Okay. Finally, with the Tableau Power BI also, I have to use. See, you cannot say both things at the same time, Tableau and Power BI. If your interview is on Tableau, it will be on Tableau. If you're saying Power BI, then target one thing. Don't write both things in your resume. You can write both things in your resume, but you need to focus on one thing. Primary skill set should be one. Otherwise, both the things should be good. If you are taking Tableau and Power BI, then you need to have same kind of rating in Tableau as well as Power BI. Because a project, in your project, it will be only one tool that will be used, right? In the same project, both the tools won't be used. So coming on to your introduction at first. So you started nicely that I always say that uh, always start your introduction stating like, thank you for giving me the opportunity to introduce myself, which you maintained. So I was happy on that. Uh, but when it comes to your introduction should be very solid and crisp. It should not be a very elongated one because what happens when you give an elongated introduction, you kill the time. The interviewer will have 30 minutes or 1 hour for the interview. But if your introduction is of 4 minutes or 5 minutes, then I'm losing most of the time. So what you need to mention in your introduction, first of all, yes, thank you for giving me the opportunity. My name is this. I completed my graduation in this, and then I started working with this organization. Then directly come to your primary skill sets, as you mentioned. My primary skill sets are this, and my secondary skill sets are this. Overall, I'm carrying this many years of experience in Tableau and this many years of experience in SQL and other things that you wanted to mention. So those are fine. Then, instead of explaining the agile methodology in your introduction, talk that in my domain is this, and in this project, I am using agile methodology, wherein we follow the entire process of agile, starting from the sprint planning till sprint review in the agile framework manner, wherein many teams are involved, and also we have got our project manager or a scrum master who's actually controlling the entire agile bus. So what happens is that there are two ways an introduction and an interview can be driven. It can either be driven by you or it can be driven by the interviewer. In today's interview, if you check the recording, I was driving the interview. You were not. Why? Because I was picking up your points and I'm asking the points to relate to your experience and all. And also, I'm giving asking you some tricky questions as well. But how you need to address each interview is by giving the points to the interviewer. So what happened in the introduction? You mentioned about the agile terminologies. Now the interviewer will be interested in those terminologies. He will listen to अच्छा उसने agile sprint planning बोला. So let's ask question on sprint planning. What is the duration of the sprint? क्या होता है sprint planning? And when you are already aware of those things, what will happen? The question that the interviewer will ask, you can answer to that question because you are already aware of it. But today, what happened when I asked you about sprint planning? What was your answer? I'll tell you. I have written down a little bit, whatever I could. You told that it depends upon the department. A sprint planning cannot depend upon a department. Yes, definitely it will depend upon the project life cycle. But a sprint planning in Tableau projects generally is of 2 weeks. You mentioned of 48 hours.
How can a sprint last for 48 hours? It can be a ticket that can that can have an SLA of 48 hours or 72 hours. And you also mentioned that for some of the departments or some of the project, it is of 1 week. 1 week sprint is also not possible. Okay. So a sprint duration can be of 2 weeks. It's a bi-weekly sprint. And the entire project duration can be of 3 months to 6 months. It can be of 2 months as well. So if it is of 2 months, it will be distributed in 4 sprints. 2 week sprint for 4 weeks, it can be done. So your explanation of agile is not very clear because you are not giving the points like Scrum Master, what is the role of Scrum Master, how the story pointing is done. You are saying that I have 3 years experience in BA. Now you are telling that the sprint planning is done by BA. Then at the end also, once again, you told I am doing the entire thing. So it is not matching with each other. Are you understanding my point? तुम Yes, I देखना am. जब वो जो रिकॉर्डिंग जब देखोगे ना तब समझ जाओगे कि initially you told I have 3 years of experience in BA, then 4.5, 5 years of experience in Tableau. Then you started saying that my day starts with BA. तुम खुद ही BA हो बताया हो बट फिर भी बोले हो starts with BA. Then distribute storyboards and knowledge. It is not stored. Obviously, the place where we represent our stories is called the storyboard. Okay. But we do story pointing. तो ये जो terminologies है ना वो correct नहीं हो रहा है. If you're saying 4.5 years of experience or 6 years of experience in IT industry, this point should be absolutely crystal clear where you are actually going wrong. So you need to talk about the story pointing that is represented in storyboards. And then if you're telling storyboards, you need to talk about the tool as well. कौन सा tool use कर रहे हो for storyboards तुम्हारे project में? Jira, Jira. Jira You have is not mentioned Jira. अंडरस्टूड कि मतलब तुम पॉइंट्स तो बोल रहे हो बट आधा अधूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है विथ एक्सपीरियंस कम्स एक्सपीरियंस तो वो कि पूरा कंप्लीट होना चाहिए पॉइंट्स इफ यू आर सेइंग दैट स्टोरी बोर्ड्स है देन यू शुड immediately say that in our project all our storyboards are maintained in a tool which is called as Jira wherein we get the requirements over Jira as well. If we have got any kind of blockers we highlight that on Jira tool and we have our daily scrum calls as well wherein we discuss what are we doing today and what we did yesterday. If we have got blockers and dependency on other team, we highlight that as well. So you have not mentioned about blockers, you have not mentioned about Scrum call, you have also not mentioned about the backlogs. एक ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्प्रिंट में हर एक टास्क अचीव हो रहा है राइट कुछ कुछ टास्क कभी कभी बाकी रहता है उसका क्या होता है तो अजाइल का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाट हैपेंस टू द बैकलॉग्स यू हैव नॉट मेंशन अबाउट बैकलॉग्स एज वेल सो आइदर तुम्हारे ये पूरा अजाइल प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर है नहीं जो कि करना बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस 4.5 इयर्स एक्सपीरियंस तुम बोल रहे हो फॉर टैबलो और पता है बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि ये नहीं पता है कि इस तरीके से पूरा फ्लो चलता है सो आई हैव एक्चुअली टेकन अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन ऑन अजाइल वो कंटेंट यूट्यूब वगैरह में अवेलेबल नहीं है इट्स माय 9.5 years ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई शेयर कि कैसे रिपोर्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अजाइल काम करता है इन टैबलो प्रोजेक्ट इफ यू वांट यू कैन टेक दैट सेशन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट बहुत लोगों ने लिया है सबसे अप्रिसिएशन मिला है कि लाइफ टाइम के लिए सॉर्ट हो जाए तुम्हारा प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस सो दैट इज एक्चुअली मिसिंग इन योर आंसर्स देन यू मेंशन आई एम फ्रॉम एसक्यूएल साइड व्हाट डज दैट मीन मतलब तुम बेसिकली हिंदी को डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो कि मैं एसक्यूएल से हूँ सो देयर इज नथिंग कॉल्ड यू शुड से दैट आई एम जस्ट गिव मी अ मिनट आई थिंक माय हाउस हेल्प हैज कम जस्ट a minute. Right. So as I was mentioning that you mentioned that I am from SQL side. So you should not say that manner. You should say that being a senior developer, I'm handling a little bit of data modeling as well, wherein I have to either rewire the queries or if the requirement changes from the clients, I do query restructuring using SQL. And at the same time, I am working extensively on Tableau as well, wherein I use the database and the tables, which I'm aware of according to the requirement, and create my visualizations on Tableau. So in this should be the flow when you are talking in the manner.
देन तुमने जो अजाइल सेशन दैट यू हैव मेंशन, तुमने वो फ्लो वापस से रिपीट किया है, सेइंग दैट मेरा ये काम। तुम देखना वो रिकॉर्डिंग अगर देखोगे ना, तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली you have mentioned about the agile, you have mentioned about the flow at the end, you have once again mentioned about the same thing, talking about that my daily work is like getting the requirement from the client, understanding it, and then deploying to the server or something like that you have mentioned. So that is something that you need to really work upon to talk about or express yourself during the time of interview, specifically your job role. उसमें ही तुम्हारा रिजेक्शन हो गया फॉर मी, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर डेली रोल। जो जो काम तुम 4.5 साल से कर रहे हो, वो अगर पार्ट तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली इन द वे यू शुड, तो वहीं पर ही मेरे लिए रिजेक्शन है। कितना टैबलो नॉलेज है कितना नहीं है, उसमें मैं जाऊंगा ही नहीं। तुम तो खुद अपना काम ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सो दैट शुड बी समथिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन। Now, talking about the KPIs, you have mentioned the KPIs properly. I'm happy. थोड़ा और polished answer होगा तो और भी better है, but I'm happy to the KPIs. But now, with respect to the KPIs, when I asked about क्या क्या charts तुमने use किया है और क्यों use किया है, you should have that answers as well. Because when you're talking about KPIs, you know the KPI very well, and you know your project very well, more than me. Now I asked you a tricky question कि heat map क्यों use किया? Because तुमने ही बोला है heat map use किया, मैंने नहीं पूछा है अलग से। You told for that reason I asked this question. You forgot कि heat map में basically होता क्या है? It's size and shape. तो वहीं पर ही मैंने तुम्हें पकड़ लिया कि वहां पे क्या पोर्ट्रे होगा पता है? तुम देखना इंटरव्यू समझ में आएगा कि he is just faking it. He has not worked on it. समझ पा रहे हो कि क्या एग्जैक्टली exactly हो रहा है? कि इंटरव्यूअर को समझ में आ जा रहा है कि अगर मैंने सही में काम किया है कि काम नहीं किया है। और अगर किया भी है, अगर ऐसे बोलोगे तो लगेगा कि तुमने काम नहीं किया। बट अगर किया है तो प्रॉपरली बोलो, अगर नहीं भी किया है तो भी प्रॉपरली बोलना पड़ेगा। दैट इज द मेन थिंग। एंड मैंने तो वो क्वेश्चन पे आया ही नहीं, अगर हीट मैप किया है तो ट्री मैप क्यों नहीं किया? दोनों तो सेम चीज ही है, ऑलमोस्ट सेम चीज है। एक में हायरार्कियल होता है, एक में नहीं होता है। जी तो जी। वो क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी, मतलब देखो अभी वही मैं तुम्हें बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि आंसर्स इस तरीके से जो दो ताकि तुम खुद फंस मत जाओ। सिंपल, यू शुड नॉट फॉल इन योर ओन ट्रैप। इन दिस एंटायर इंटरव्यू यू फेल इन योर ओन ट्रैप। अंडरस्टूड? देन टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड जॉइंट्स, उल्टा ही बोल दिया राइट। इन जॉइंट्स वी हैव फिजिकल लेयर, इन रिलेशंस वी हैव लॉजिकल लेयर। उल्टा बोल दिया मतलब इट्स रॉन्ग आंसर। ये कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं है कि आई गिव यू ऑप्शंस, नहीं तुमने ये गलत बोला है वो सही बोला है। ये तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मॉक इंटरव्यू, इंटरव्यू का बोले ओके इट्स फाइन फाइन, ओके माय एचआर विल गेट इन टच विद यू। फिर वो एचआर इधर कभी नहीं टच में आएगी, नहीं तो बोलेगी यू आर नॉट सिलेक्ट। अंडरस्टूड? सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड देन टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ फिल्टर्स, उसमें भी गलत, मतलब बेसिक्स पे ही गलत हो रहा है। समझ गए? यू स्टार्टेड विद डेटा सोर्स फिल्टर, डेटा सोर्स फिल्टर एंड एक्सट्रैक्ट फिल्टर, उसमें गलत हो गया। देन टॉकिंग अबाउट एलओडी, फिक्स्ड एलओडी का कहाँ पे लोकेशन एग्जैक्टली? कॉन्टेक्स्ट फिल्टर, फिक्स्ड एलओडी, डिमेंशन फिल्टर, देन मेजर फिल्टर, देन योर इंक्लूड एंड एक्सक्लूड एलओडी, देन क्विक टेबल कैलकुलेशन। तो वो मतलब दिमाग में एकदम साफ होना चाहिए। ऐसे ऐसे अटक जाओगे तो उसमें ही नो हो जाएगा। समझ गए? देन टॉकिंग अबाउट कॉन्टेक्स्ट फिल्टर, मैंने पूछा किसके लिए काम आया वो, तो वो भी एकदम पॉलिश्ड आंसर नहीं आया है। तुम्हें अगर बताना है कि टॉप सेल्स, तुम बताओ टॉप सेल्स के लिए अगर मैं कॉन्टेक्स्ट फिल्टर यूज करूंगा, कॉन्टेक्स्ट फिल्टर तो मैं एक चीज को टारगेट कर सकता, इट्स अ फिल्टर। तो उसमें टॉप सेल्स का क्या काम आएगा बताओ? किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे उस चीज को? क्लस्टर एक पर्टिकुलर, जैसे कि कोई पर्टिकुलर रीजन है, तो कोई भी जनरली एक फिल्टर, जो कोई भी एक डेटा है उसको फिक्स कर देना है, हाँ, उसके उसके अंदर जो टॉप 5 हमेशा correct. दिखते So हैं। that you should have told that in my project there was a requirement wherein I had to show the top sales of a particular region. So what I did, I put that region in my context filter.
So what happened? Tableau in the context filter, they create a temporary table. And then my database was my Tableau was interacting with the temporary table. And from that temporary table, I fetched the top six or something like that. So that should be the answer. What you are saying, region wise, I have to prepare top six. Region wise, तुमने बताया. You have not mentioned that fixed region wise. So for that reason, I asked you the question, share me your screen and show me how you can get the region wise cells. उसमें भी गड़बड़ कर दो, वो मैं आंसर बताऊंगा नहीं जो तुम कर रहे हो, वो तुम सॉल्व करके मुझे बताओ, ठीक है? रीजन वाइज टॉप थ्री कैटेगरीज जहां पे सेल्स हुआ है, वो हम मेरा रिक्वायरमेंट है. So there was also a challenge. So what I have observed in today's interview that your Tableau knowledge base is not coming out strong. Understood? There are hiccups that I can observe. Though you might have worked a lot, you have worked on multiple projects, you are assuming that I have understood Tableau and everything. Actually, you need to brush up your skills once again. You cannot make mistakes on the areas that you have made mistakes. I have not asked you many questions. If I have to, means might be in our next interviews and all, I will deep dive in all the questions and all. Custom chart that you mentioned, waterfall. But see, if you are sorry, not waterfall, you mentioned funnel chart. But in funnel chart, what did you show or how are you representing the data? What you are getting out of it should always be your answer. कि क्या मिल रहा है अगर 2G 3G that you are representing in funnel chart, then how you are representing it? वो आंसर नहीं आ रहा है, मतलब funnel chart में क्यों यूज करूं? जैसे आई आस्क्ड यू कि वो चीज तुम हीट मैप में क्यों यूज किया है? वो तो कुछ अलग अलग चार्ट में और भी अच्छे से वो रिप्रेजेंट करेगा. हीट मैप तो इतना बड़ा स्पेस ले लेता है. Generally, Tableau developers or clients avoid heat map because it takes a lot of space on the dashboard and it does not look good. We try to keep our dashboard minimalistic design होना चाहिए dashboard में. Heat map वगैरह में वो आंखों में आता है. Many of the clients actually avoid heat maps. तो वही मेरा क्वेश्चन था कि हीट मैप क्यों यूज कर रहे हो एक छोटे से रिक्वायरमेंट के लिए? हाँ, अगर ऐसा होता कि बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, हीट मैप को कलर के जगह पे तुम एज अ टेक्स्ट उसको दिखा रहे हो, देन आई थिंक इट विल बी फाइन. और अगर वेबसाइट में पब्लिश कर रहे हो डैशबोर्ड, देन आई थिंक इट विल लुक गुड. बट नॉट ऑन टैब्लो डैशबोर्ड्स, इट डजंट लुक गुड, हीट मैप एंड ट्री मैप्स. People might use it, but yeah. So if you're talking about custom chart, funnel chart, अगर तुम बोल रहे हो, then talk about why funnel chart और उससे क्या analysis तुमने किया है. That should be crystal clear in your mind in respect to the KPIs that you are seeing. And you should always say that in my project, there was a KPI, which was this. And for that KPI, what did I do? I created a custom chart, funnel chart, because that was the requirement of the client, wherein I represented this, and it basically, I did this analysis. The funnel chart was showing this thing. So you should know about your KPIs and talk in regards to the KPIs and the project flow that you have designed for yourself. That should be the approach. Okay. समझ पा रहे हो, right? Something you are able to relate, right? sorry. Right. So hearing, so my underlying जो root cause analysis जो डिस्कस कर रहे थे वो यहीं पर ही है. तुम्हारे कम्युनिकेशन में कुछ इशू नहीं है. वट एवर दैट यू आर थिंकिंग कि मेरा प्रॉब्लम हो रहा है या जो भी हो रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. पीपल विल रिलेट टू इट, अंडरस्टैंड टू इट. प्रॉब्लम हो रहा है कि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन विथ रिगार्ड्स टू द एक्सपीरियंस दैट यू शो. You are talking like a fresher when you are telling I have 4.5 years of experience. There is the problem. You cannot explain your own flow. Why? Because your agile is not strong. You also know that your agile is not strong. What तुमने क्या किया? Bits and pieces इधर उधर से देखा, फिर अपने प्रोजेक्ट में कुछ 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 चीजें देखा. End to end, from requirement gathering till deployment, वहां तक कैसे फ्लो होता है वो तुमने बताया नहीं. डू यू गेट प्रोटोटाइप्स? तुम्हारे प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम हो रहा है? हाउ डू यू गेट द रिक्वायरमेंट? कैसे आता है? रिक्वायरमेंट वही जीरा में ही है जनरली, वो स्टोरी बोर्ड वगैरह आ जाता है. वो तो मैं फिर समझा, बट डेली आता क्या है? मतलब बेसिकली जीरा बोर्ड में स्टोरी वो सब मुझे नहीं चाहिए.
सपोज अगर मैं क्लाइंट हूँ, मैं तुम्हारे पास आया कि चित्रांशु आई नीड अ डैशबोर्ड टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ दिस डेटा, देन तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? मतलब किस तरीके से बोल दो, वो लोग कुछ देते हैं कि डैशबोर्ड ऐसे होना नहीं चाहिए, नहीं, वो देते हैं, वे लोग देते हैं कि तो व्हाट इज ये दैट कॉल्ड? लेआउट। दैट इज अ प्रोटोटाइप दैट इज शेयर्ड विथ यू, दैट इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ अजाइल। तो अजाइल बोल रहे हो तो ये सब चीजें तुम्हें बोलना पड़ेगा कि दे एट फर्स्ट डिजाइन देयर डैशबोर्ड एंड दे गिव इट टू अस एज अ प्रोटोटाइप। इट कैन बी अ पीपीटी, इट कैन बी एन इमेज, इट कैन बी एन एक्सेल फाइल और समथिंग, एनीथिंग। देन बेस्ड ऑन दैट प्रोटोटाइप दे एक्सप्लेन बीए का काम क्या है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क नहीं, बीए का मेन काम है एक्सप्लेनिंग द प्रोजेक्ट। तुम्हें अगर बताएगा नहीं रिपोर्ट का मतलब क्या है, तुम जिंदगी में समझ पाओगे वो रिपोर्ट से क्या आएगा? कभी भी नहीं समझना। बिजनेस लॉजिक कौन शेयर करेगा? तुम तो अपने मन से उसका प्रोजेक्ट नहीं समझोगे, राइट? टेलीकॉम में नंबर ऑफ सेल्स निकालने के लिए क्या क्या फील्ड्स यूज हो रहा है, यू वोंट बी अवेयर ऑफ इट, राइट? मैं अगर आता हूँ काम करने में, मुझे पता नहीं होगा, मैं क्या करूंगा? डॉक्यूमेंट्स रेफर करूंगा, राइट? द बिजनेस लॉजिक रेफर करूंगा। So that you need to say that the BA actually explains the project based on the prototype that we have. He shares the business logics to it as well. We have a grooming session wherein they explain the entire thing. If we have any question, we ask them. And the most important thing, the tasks are divided into priority and complexity. जो स्टोरी पॉइंटिंग होता है ना, उसमें प्रायोरिटी होता है कुछ चीज, कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है। कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से डिफाइन होता है, दैट विल बी द क्वेश्चन। तो ये सब बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो मिसिंग है। अगर तुम पहला राउंड क्लियर भी कर जाओ, कैसे भी कर, सेकेंड राउंड में क्लियर ही नहीं कर पाओ, क्योंकि सेकेंड राउंड में यही सब चीजें पूछा जाए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अजाइल द बेस्ट वे पॉसिबल, अच्छे से उसको जानो। आई हैव अ गुड डॉक्यूमेंट दैट आई हैव क्रिएटेड व्हिच आई कैन शेयर विथ यू। It's a chargeable document though, but yes, it has helped many, almost around 25 to 30 students have taken that, and it has helped them to clear their interview. It will help you as well. But Tableau को please strong बनाओ. Go through the interview once again. I'll share with you the recording. Go through the interview once again. जो जो questions पूछा है देखो, अपने आप को देखो, and be honest with you. विथ योर सेल्फ कि अरे यहाँ पे मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। नो, मेक नोट्स, मेक योर ओन आंसर्स, डू नॉट मग अप द आंसर्स, मेक योर ओन आंसर्स एंड ट्राई टू से वंस अगेन। वापस से इंटरव्यू को स्टॉप करो, पॉज करो, आंसर बोलने की कोशिश करो, मेक द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग एज वेल। सो मुझे लग रहा है इन फोर फोर इंटरव्यूज तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाए, बिकॉज बहुत सारे इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग धीरे धीरे और डीप में घुसे। ये तो डीप तो था ही नहीं, एबीसीडी भी नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछा, उसमें अटक गए। एम्प्टी एक्सट्रैक्ट, चित्रांश, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एम्प्टी एक्सट्रैक्ट देन यू नीड टू नो व्हाई यू हैव यूज्ड एम्प्टी एक्सट्रैक्ट। तुम बोल रहे हो सीक्वल रिफ्रेश नहीं हो रहा था, और देखिए हो गया ना, तो सीक्वल रिफ्रेश नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने एम्प्टी एक्सट्रैक्ट यूज किया। एम्प्टी एक्सट्रैक्ट तभी यूज होता है जब ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा तुम हैंडल करते हो, 20 million, 30 million डेटा अगर तुम हैंडल कर रहे हो, at that time you cannot create the extract as well because it takes time. That is why it is extract, empty extract. So empty extract is when you will be publishing it to the server, you will upload all the data in the server. So that is the concept of, so check the concept of empty extract, explore, there are many videos available online. Check it, understand it, try to create on your own as well, one empty extract. And then you try to relate everything to your project. Because in, have you faced live interviews? या लाइव इंटरव्यू किया है मैंने। कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? इस तरीके से, राइट? एग्जाम्पल दो, ये दो, वो दो। मैं अभी तो एक लास्ट 2 वीक्स पहले एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें जनरली लोगों ने स्टार्ट किया, पहले सीक्वल से स्टार्ट किया। हम्म। सबसे पहला राउंड उसने ये दिया था, हैकाथन का एक 1 आवर का वो लिंक दिया था करने के लिए सीक्वल का, तो वो क्लियर हुई थी तब उसने इंटरव्यू लिया था। तो उसमें उन्होंने पहले सीक्वल से स्टार्ट किया, ज्वाइन पूछा उसने, 2-3 टेबल दिया, ओनली वन आईडी था, उस पर उन्होंने ज्वाइन का कॉन्सेप्ट चेक किया, फिर लो को कॉलम में कन्वर्ट करने को बोला,
फिर धीरे धीरे सीक्वल खत्म हुई, फिर टॉप हाईएस्ट सैलरी, डुप्लीकेट वगैरह जो जो बेसिक क्वेश्चन आती है सीक्वल में, वो सब पूछ लिया। उसके बाद फिर टेबलू में उसने यही जो अभी आपने पूछा वो पूछा था। उस समय मेरे से बन गया, लेकिन अभी कोई कुछ मिस हो हो रहा था। ये वाला मैंने बनाया था उसको, टॉप 5 एंड बॉटम 5 एक ही साथ मैंने बनाया था वहाँ पे। टॉप फाइव बॉटम फाइव तो सेट से ही हो जाता है, उसके लिए जरूरत उतना कुछ है नहीं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। टॉप थ्री पर कैटेगरी रीजन वाइज, तो थोड़ा सा डिफरेंट ये चीज है। तो सेट से भी कर सकते हो, बट हाँ तुम ट्राई करो इसको, देखो। और एक चीज, जॉइन एंड ब्लेंड का डिफरेंस। देखो, रिलेशनशिप, जॉइन एंड ब्लेंड, दीज आर द थ्री कॉन्सेप्ट जो कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उस पे अटक गए तो अटक गए, मतलब वो टैबलो इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाई यू आर नॉट गोइंग फॉर क्रॉस डेटाबेस जॉइंस, व्हाई यू आर गोइंग फॉर ब्लेंड। तुम बोल रहे हो ब्लेंड इज इजियर एंड फास्टर, देन यू शुड हैव द आंसर राइट कि क्यों फास्ट है। क्रॉस डेटाबेस जॉइन जब तुम करते हो, इट क्रिएट्स डुप्लीकेट्स, however in blend it removes the duplicates। तो उस इसीलिए फास्ट है वो। इट्स नॉट कि वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट जॉइन है, उस वो तो लिमिटेशन है ब्लेंड का। तुम लिमिटेशन को तुम बोल रहे हो कि बाय डिफॉल्ट उसको लेफ्ट जॉइन है, वो तो जॉइन में भी है। तुम बोल रहे हो आई कैन फेच पर्टिकुलर कॉलम्स, वो तो जॉइन में भी है। तो समझ गए, यो जो आंसर दे रहे हो वो टू द पॉइंट नहीं हो रहा है। इंटरव्यू भी फिर है कि क्या आंसर दे रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ऐसा ही फीलिंग आ रहा था मेरे को भी, वैसे ही फीलिंग आ रहा था कि कुछ भी बोल रहा है, मतलब अपने आप को। आइदर इफ यू आर नॉट अवेयर, से दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट द मोमेंट, माइट बी आई विल एक्सप्लोर ऑन दैट, rather than giving anything। it's better to accept कि हाँ नहीं आ रहा। उससे क्या हो रहा है, और यू आर लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरव्यू, बिकॉज तुम कुछ भी रिलेट कर रहे हो। तुम बोल रहे हो कि आई हैव गॉट सीक्वल नॉलेज, एंड उसमें तुम जॉइंट्स को ही सही तरीके से बोल नहीं पा रहे। सो यस, देयर आर मेनी चैलेंजेस दैट वी हैव, बट ये सब चैलेंजेस सबको होता है। मेरे को भी एक पॉइंट पे था, ये सब चीजें बोल नहीं पाता, बट फिर धीरे धीरे इट्स गुड दैट यू हैव अ गाइडेंस राइट नाउ कि जो तुम्हें बताएगा कहाँ पे एग्जैक्टली रॉन्ग जा रहे हो। तो हैकाथॉन का अगर सीक्वल राउंड तुमने क्लियर किया है, यू शुड हैव क्लियर द इंटरव्यू, बट स्टिल यू डिड नॉट, राइट। सो वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स का ऐसा हुआ होगा जो तुम भी समझ नहीं पा रहे हो। आज का इंटरव्यू तुम देखो वापस एंड तुम समझ पाओ। माइट बी वंस यू डेवलप योर स्किल्स अ लिटिल बिट, 2-3 दिन टाइम ले लो, वापस और एक इंटरव्यू दो, देन आई विल सी द रियल डिफरेंस कि कितना ये हुआ है। एंड मैं तो तुम्हें एडवाइस करूंगा, गो फॉर द अजाइल सेशन एंड लर्न इट, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत हेल्प करेगा तुम्हें पूरा, मतलब अजाइल घोल के पी जाओ। टिल द टाइम अजाइल इज रनिंग, यू डू नॉट हैव टू प्रिपेयर अबाउट अजाइल। वो हर एक चीज के लिए काम करेगा। सो दैट इज द थिंग। आई थिंक दैट दिस सेशन हैव हेल्प्ड यू, या राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू से? या श्योर, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एक So क्वेश्चन what take will you have after this to this? क्या सीखा, if I have to tell you इस सेशन के बाद? टू द I have to answer to the point. हम्म, Whatever technology the terms I am using, I have to answer to the point. right। Mm, And don't be nervous, okay। See, at the end job अभी भी नहीं है, कभी भी नहीं होगा, बट मैं नर्वस हो जाऊंगा तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो हर एक क्वेश्चन को पहले सुनो, अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूअर क्या सुनना चाहता है, उसको फीड द इंटरव्यूअर व्हाट ही वांट्स टू हैव। दैट इज माय मेन मोटो ऑलवेज। मैं उस तरीके से आंसर देता हूं ताकि इंटरव्यूअर जो सुनना चाहे, वो क्यों ये क्वेश्चन पूछा है, कुछ सुनना चाहता है वो मेरे से, कुछ पॉइंट्स वो सुनना चाहता है। वो पॉइंट्स को ही हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट। वो पॉइंट्स हाईलाइट कर दोगे तो इंटरव्यू में भी सेटिस्फाइड कि हाँ चलो उसने सही से बोला। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं डीप डाइव जाऊंगा, टैब्लो रिलेटेड, सीक्वल रिलेटेड। सीक्वल के मैं तो 2-4 क्वेश्चंस पूछा, यू टोल्ड ऑल द आंसर्स करेक्टली इन सीक्वल, सो आई वाज हैप्पी। कि बहुत लोग ये भी नहीं बोल पाते कंस्ट्रेंट्स क्या है, वो नहीं बोल पाते। दो द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स में थोड़ा मगअप हो गया है तुमसे, बट फिर भी तुमने बताया। एंड यू मेंशन ब्यूटीफुली डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट, ऑल द पॉइंट्स दैट यू मेंशन, also the rollback and everything।
DDL DML क्या है वो भी तुमने मेंशन किया, so it was a perfect answer. That is what the interviewer wants to hear. So in Tableau related as well, they wants to hear the entire thing like the way you answered for SQL. Okay. In our next interview, I will give you multiple queries to write, multiple problem statements in Tableau to share your screen and solve it. That will help you. And yeah, all the best till the next round. And let me know when you will be ready for the next round. I think we can go with that flow. One question is like, Yes, sure. so, one question generally what they ask is, have you worked on any migration project, and Mhm. how to minimize the Tableau performance? ऑप्टिमाइज द इसमें टैबलो परफॉर्मेंस, सी वो उसमें मैं अभी तक गया ही नहीं। वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टैबलो डैशबोर्ड्स। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा ही तुम्हें। सी देखो, सबसे मैं कुछ कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड ऑलवेज टैबलो परफॉर्मेंस इन टैबलो डेटाबेस रिपोजिटरी इटसेल्फ. So you should say, as a Tableau developer, my main focus that most my data should be absolutely clean. There should not be any duplicates. So I ensure that before I create the Tableau database repository, I get eliminated of all the columns that are not required in my Tableau dashboard. Or if any kind of duplicates are there, I target that in my SQL. I use partition by concept and remove that duplicates from my SQL. Or in Tableau, there I can target that using fixed LOD and remove it from my repository. So the first point will be that. Second, I tend to use custom SQL as well. So whatever fields that I require from the table, I create relationships and I use custom SQL queries wherein I target only the fields that will be required for my database repository creation. So ये हो गया database पे. Second comes the type of connection that you want to use. So the type of connection that is required, I tend to go for extract rather than live. But if my customer demands that it should be a live connection, only then I go for live. Then I do performance recording. तो तुम्हें पता है performance recording क्या है Tableau में? परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वहाँ पे, उतना डिटेल में नहीं, तो मैंने वो वो चेक ट्राई करो, नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है वो। परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग करके वो एक लॉग फाइल क्रिएट करता है। एक्सट्रैक्ट में उस लॉग फाइल का नाम अलग होता है, लाइव में वो लॉग फाइल का नाम अलग होता है। तो रिमेंबर दोज नेम्स एज वेल, वो बोलोगे तो आंसर बहुत ही अच्छा होता है। So tell that I check the queries that get it, means whatever action that you do in Tableau, Tableau creates query at the backend, right? So you check the queries and see how much time it is taking, and then you minimize your number of filters and everything. Then coming to the dashboard designing, you design by using containers, not floating. Floating use नहीं करते हो, ये floating से कंटेनर्स यूज करते dashboard breaks. So you use containers. You tend to use minimalistic design as possible, and the use of filters is also less. You tend to use more of action filters rather than quick filters, because action filters से बहुत कम हो जाता है. Then you tend to use the concept of alias rather than when condition. You tend to use more Boolean data types rather than string and integer data types. You can talk about that. Coming to the performance, also you can talk about uh, the importance of context filters. Context filters improves the performance, but too many context filters reduces the performance. So you can say that I use less of context filters, but context filters actually helps me to improve the performance and everything. So you can talk about that as well. So basically तुम्हारा performance of database repository से होता है and dashboard designing पे आके खत्म होता है. So in this way you should talk about the flow. ऐसे फ्लो में बात करोगे ना, उसको ये नहीं जानना है कि कितना तुम्हें आता है, उसको ये जानना है तुम्हें हर एक चीज पता है कि नहीं। अगर इस फ्लो में बात करोगे वो तो सोचेगा अरे वाह क्या आंसर दे रहे हैं, स्टार्टिंग से एंड तक उसने बता दिया, तो आई एम सिलेक्टेड। एंड फिर भी उसके रिलेटेड कुछ अगर काउंटर क्वेश्चन उसने किया, तो इफ यू आर अवेयर देन यू कैन टॉक अबाउट दैट इज वेल। समझ गए काउंटर क्वेश्चन क्या होगा, लॉग फाइल का नाम क्या है, लॉग फाइल में क्या चेक करते हो, तो यू शुड नो, यू शुड डू योर होमवर्क प्रॉपर। डिड दैट आंसर योर क्वेश्चन? ऐसे बताते या थे क्या तुम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे बोलते ये पहले तो मैं यही बोलता हूँ कि अननेसेसरी कॉलम्स जो है उसे हो? हटाने के लिए स्ट्रिंग्स
स्ट्रिंग्स है उसकी जगह बुलियन ज़्यादा यूज करने के लिए। फिर मैं ये बोलता हूँ कि जो भी डेटा हम फेच कर रहे हैं वो उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए, ये बोलता हूँ। फिर उसके बाद मैं ये बोलता हूँ कि जनरली ज़्यादा फिल्टर्स यूज नहीं करने के लिए, और जनरली एक्सेल फिल्टर का मैं बोलता हूँ। बस यही 4-5 पॉइंट मैं बोलता हूँ। हम्म। पॉइंट्स तो सही बोल रहे हो, बट किस तरीके से बोल रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट इंटरव्यू आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड मुझे प्रॉपर फ्लो में आंसर चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली बोलना, वो उसके बगैर परफॉर्मेंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो तो मत ही ऑमिट करो, सिर्फ ये तो वो इंटरव्यू क्वेश्चन में ही आंसर्स लिखे हुए हैं, तो वो बोल के फायदा नहीं है। तुम्हें एज अ टैबलो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें आंसर बोलना पड़ेगा, जो कि रियल लाइफ में टैबलो डेवलपर्स फेस करते हैं, उस तरीके से तुम्हें बोलना पड़ेगा। तो यही चीज है। और से और एक क्वेश्चन क्या पूछा था तुमने? माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स अभी माइग्रेशन बहुत। प्रोजेक्ट। सो माइग्रेशन प्रोजेक्ट यू कैन टॉक अबाउट। देखो, तुमने अगर नहीं किया है माइग्रेशन प्रोजेक्ट, तो उसमें तुम्हें ये बोल सकते हो कि इनिशियली इन माई माई क्लाइंट्स यूज्ड टू मेंटेन ऑल द रिपोर्ट्स इन एक्सेल, सो आई माइग्रेटेड ऑल द एक्सेल रिपोर्ट्स टू टैब्लो डैशबोर्ड्स। तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है? ऑब्वियसली एक्सेल में अलग तरीके से कॉन्सेप्ट्स यूज होता है, पीवर्ड टेबल्स एंड ऑल यूज होता है। तो वही कॉन्सेप्ट टैब्लो में किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू रिमूव ऑल द CSV फाइल्स दैट आर अननेसेसरी। You ensure that everything should be fetched from the database. So you mentioned that you are working on SQL Server. So you can say that the we have asked the clients to get all the database, all the data in one database. So they are mentioned there, they have used SQL Server. So now we clean the data in the SQL Server and we distribute it into various tables. And then I drag all the tables in my Tableau repository and create my repository data source and start working on it and try to and achieve the entire visualizations that we have in Excel in Tableau। ऐसे बोल सकते हो। नहीं तो पावर बीआई तुम्हें पता है, तो पावर बीआई का कोई प्रोजेक्ट माइग्रेट तुम टैब्लो में करो। पावर बीआई में जो डैशबोर्ड है वही चीज तुम टैब्लो में माइग्रेट किए हो, वो बोल सकते हो। इट कैन बी अ माइग्रेशन ऑफ डेटाबेस एज वेल, कि पहले सपोज से स्नोफ्लेक यूज हो रहा था, अभी तुम सीक्वल सर्वर यूज कर रहे हो। तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या चैलेंजेस तुमने फेस किया है उसमें। तो इसीलिए एक्सेल इसलिए बोल रहा हूँ या पावर बीआई इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जिसको तुम्हें पता है। स्नोफ्लेक नहीं पता तो तुम्हें चैलेंज बोल नहीं पाओ। पावर बीआई में क्या चैलेंज हो सकता है इमेजिन करो, मैं बताओ। चैलेंज तो ऑब्वियसली द पहला चैलेंज जो कि होता है वो है कस्टम चार्ट्स। टैब्लो में सिर्फ 24 चार्ट्स ही अवेलेबल। कुछ अगर कस्टम चार्ट यूज हो रहा है उसको क्रिएट करने में टैब्लो में बहुत पसीना छूट जाता है, राइट। सैंकी सैनवर्स चार्ट अगर बनाना होगा तो वो पावर बीआई में बहुत इजीली बन जाता है, बट यहाँ पे नहीं बनता है, राइट। एंड वैसा ही विजुअलाइजेशन, वही डिजाइन रिक्रिएट करना भी थोड़ा टफ होता है। देन यू कैन टॉक अबाउट कलर ब्रांड ब्रांड गाइडलाइंस। रेफरेंस फाइल्स क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ क्लाइंट्स कस्टम कलर्स एंड फॉन्ट्स यूज करते हैं, राइट। उसके लिए प्रेफरेंस फाइल क्रिएट करके फिर उसको रिपोजिटरी में ऐड करना पड़ता है एंड देन you create the brand guidelines according to that manner. So many things that you can talk about. We will discuss about all these scenarios in our few next sessions. But yes, at first, एडवांस में जाने से पहले पूरा बेसिक्स सॉल्व हो जाना चाहिए, फिर एडवांस में चलेंगे तो उसमें एक फ्लो बनेगा। वी शुड गो वन स्टेप एट अ टाइम। सीढ़ियाँ क्लाइंब करना है, डायरेक्ट जंप नहीं करना, तो उसमें गिर जाओ, प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। And at least for the next 2 weeks, do not face any live interview. Right now, you are not prepared, as per my opinion. मैं जिस दिन बोल दिया ना आई विल सिलेक्ट यू, तुम देख लेना सारे तुम्हारा राउंड्स क्लियर हो। बिकॉज आई टेक इंटरव्यूज फॉर माई कंपनी एज वेल, राइट। मैं रिजेक्ट करता हूँ बहुत लोगों को, सिलेक्ट भी करता हूँ लोगों को, बट सिलेक्शन रेशियो इज लेस एज कम्पेयर टू रिजेक्शन। बिकॉज लोग ऐसे ही आते हैं, मतलब 5 साल एक्सपीरियंस बोल रहे हैं बट बोल ही नहीं पा रहे। आंसर भी एकदम सॉलिड होना चाहिए ना तुम्हारे कुछ एक्सपीरियंस के कुछ साथ। कुछ कुछ 1-2 ईयर का सीक्वल का इंटरव्यू मैंने भी लिया है, 1-2 इंटरव्यू लास्ट हम्म। ऑर्गेनाइजेशन में मैंने। कुछ कुछ हम्म। चीज़ें मुझे भी लगती थी कि अब इसके कुछ कुछ फ्रेशर थे, तो उन्होंने कुछ भी बोल दिया कि हाँ मैंने सीक्वल पे ये प्रोजेक्ट बनाया है।
मैंने उसे बस यही बोल दिया कि ये कंडीशन निकाल के कोई डेटा निकाल के दिखाओ, तो वे लोग नहीं निकाल पाते थे। हाँ, वो तो सब वही है, वही हो रहा है, वही वही नाव पे तुम भी आगे हो अभी थोड़ा सा, बट उसको हटाना है। वी नीड टू वर्क ऑन आवर खामियां एंड मेक इट आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो उस तरीके से प्रिपेयर कर जाओ, थोड़ा देखो, बहुत जगहों से चीजें मत देखो, उससे क्या होगा, माइंड ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। एक जगह से चीज देखो, उसको लिख के रखो, मेक योर ओन नोट्स। दिमाग में बहुत टाइम से स्टोर नहीं होगा, बट ये नोट्स बनाओगे, वो लाइफ टाइम तुम्हारे पास ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब स्विच करोगे तभी भी यही नोट्स पढ़ोगे तो याद आ जाएगा वापस। तो एक फ्लो मेंटेन करके चलो, इट विल बी बेटर। ओके। अंडरस्टूड। ओके। So anyways, I think I'm good to go now. And if you have got any questions, तो नो, बताओ. कोई Otherwise, क्वेश्चन नहीं you है। have my number. You can call me anytime and ask questions if you want help anywhere. Okay. नहीं, 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 And yeah, I'll say that go for the agile. It will help you and also clear your basics properly. So that will help. ओके। श्योर, श्योर। Okay, then. Thank you, Jitanshu, for your time. Have a wonderful day ahead. ओके, सेम थिंग, थैंक्स।